Give me a voice of thunder, that I may hurl imprecation upon this cannibal. गाजा में जो नरसंहार चल रहा है अभी तक, द जेनोसाइड दैट इज हैपनिंग इन गाजा, उसमें विकलांगों की स्थिति, डिसेबल इन गाजा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. We have a range of speakers actually. Hello, is there anybody there? Voice of thunder, I can't hear anything. imprecation upon I this hope you can cannibal. hear me. गाजा में जो नरसंहार चल रहा है अभी तक, द जेनोसाइड दैट इज हैपनिंग इन गाजा, उसमें विकलांगों की स्थिति, डिसेबल इन गाजा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. We have a range of speakers actually. The more you rely on technology, the more the problems that are going to come. I hope that's understandable. Anyway, we are going to start it. We are starting the program. Give me a voice of thunder, that I may hurl imprecation upon this cannibal, whose gruesome hunger spares neither woman nor child. Rabindranath Tagore wrote this in another time, but today his words echo in Gaza. Here, genocide disables by design. Children undergo amputations without anesthesia. The disabled crawl across rubble, denied wheelchairs, denied caregivers, fleeing bombardments on bloodied limbs. Hospitals, rehabilitation centers, even homes are reduced to dust. This is not collateral damage. It is the systematic creation of disability. The Women Enable Submission to the United Nations calls it the mass production of disability. Since October 2023, thousands have lost limbs, at least 1,000 of them children. The bombs maim. The siege denies treatment. Trauma corrodes the spirit. Disability here is not an accident. It is a weapon of war. History tells us this logic well. In Rwanda, disabled people were burned alive in churches. In Srebrenica, the elderly and disabled were abandoned to die. And in Nazi Germany, Action T4 marked the disabled as the first to be exterminated, called unworthy of life. Gaza stands in that dark lineage. Starvation itself has become a weapon. Mothers give birth without anesthesia. Babies die in incubators without fuel. Women with disabilities, unable to flee, face sexual violence and despair. This is what Palestinian feminists rightly call reproductive genocide. The mental wounds run just as deep. Children wake screaming from nightmares that never end. Anxiety, depression, grief blanket Gaza like dust. But there are no hospitals, no counselors, no safe space to heal. Here, trauma is not a moment, it is daily life. And the numbers the world refuses to see: over 59,000 dead, 1,43,000 wounded, nearly 4 lakh missing beneath rubble. Among them, the disabled erased twice, in life and in death. All this while Gaza becomes a testing ground for AI-guided bombs and surveillance tools exported worldwide for profit. From Nazi doctors to modern arms makers, genocide and capitalism have always walked hand in hand. Many Indian companies are collaborating and have joint ventures with Israeli companies and manufacture products that directly help in the Israeli Defense Forces in its genocide of the Palestinian people. History asks us again, how many more limbs, wombs, and futures must be shattered before we say, enough? And yet, in India, the disability movement has remained largely silent. While global disability organizations condemn Israel's deliberate targeting of disabled Palestinians, many here look away. This silence echoes the silence of the state. It betrays the very principles of disability justice.
Solidarity cannot be selective. The cries from Gaza demand not silence, but thunder. For the disabled of Palestine, for every life deemed disposable, we must say, never again, not in our name. आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे क्लिप पहले से दिखाया गया है, क्लिप में दरअसल वहाँ की जो स्थिति है इसके बारे में थोड़ी सी एक रोशनी, एक झलक दिखलाने की कोशिश की है। इन तमाम मुद्दे जो नरसंहार हो रहा है गाज़ा में, जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में, उसके चलते हुए विकलांग लोगों की स्थिति क्या है, उन पर क्या गुजर रही है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए ज़्यादातर साथी जो है पैलेस्टाइन से ही है। पैलेस्टीन के एम्बेसडर के अलावा 4 और साथी जो है पैलेस्टीन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 2 गाज़ा से हैं, ये वेस्ट बैंक से है। ये तमाम साथी, 4 साथी जो पैलेस्टीनियन पीपल है। 3 आर एक्चुअली पर्सन विद डिसेबिलिटी हु आर जॉइनिंग, 2 फ्रॉम गाज़ा, 1 फ्रॉम द वेस्ट बैंक। आई एम नॉट गोइंग टू मेनी डिटेल्स हियर। आई लाइक पीपल फ्रॉम द ग्राउंड टू स्पीक। जो भुगत रहे लोग वो बात करें, हम उनकी बात सुने और उससे कुछ लिख कर जाएं। उस सबसे पहले इस चर्चा को एक रूप देने के लिए, to give a perspective of the issue that is there involved actually, and also the overview of the situation existing in Palestine and particularly in Gaza Strip, I would actually invite His Excellency Abdullah M. Shawesh to actually give an intro to the situation. Abdullah Saab is an ambassador of the state of Palestine in India. Earlier, before that, he had an ambassador of the state of Palestine in Nigeria, and he's also served as a permanent observer, the mission of Palestine to the United Nations earlier. His Excellency, the ambassador, please. Namaste and Namaskar, I think. Not only Namaste and Namaskar, both of them. Good evening indeed. And I would like to start, of course, by mentioning and thanking the organizer of this very important event, Genocide of Gaza, Disabled, starting by, for sure, Comrade Murali Dahara, General Secretary of National Platform for the Right of Disabled, Ms. Diosnana Singh, representative of Jan Abhiyan. I'm pretty sure I did not pronounce the names, but you got the names for sure. I'm trying my ultimate best, of course, for their tireless effort in conducting and coordinating today's program. I also would like to thank all the distinguished speakers whom yet not participating, yet not delivered their statements, especially whom is from Gaza and of course Ziad from West Bank, for their valuable contribution that they will contribute in it, and the organizing team for their commitment and solidarity with the people of Palestine. Would like to thank, of course, Vijay Brashid, Executive Director, Tricontinental Institution for Social Research, Dr. Vijay Tiwari, Assistant Professor,
the Western Bengal University of Geological Science, also Radhika Al-Kazi, founder Astaha. Also, again, I would like to thank all the participants whom not yet joined us from Gaza, and I hope both of them, of course, Razan Saqqa and Haitham Saqqa from Gaza, to be very safe. Ziad Amro also, I wish you all the best. And now turn, and all of our protocol absorbed, now turn to my very key issue. I will not going to talk about how much, unfortunately, more disabled due to the war, or the American-Israeli war on Gaza, had been added to the list. 1,000, we are talking about 1,000. But as a specialized one in the political issue, I would like to shed light on the essence or the history of the Palestinian people, because he who did not know from where is he coming, he will not realize where is he going. What is the difference between us and anyone diagnosed of Alzheimer? Anyone diagnosed of Alzheimer did not have a history. Not because he did not have, but because he did not memorize his history. So that if he lifted his home at the morning, he will not be able to back home. He will totally get lost. So history is our memory. And we, the Palestinian, will continue to stress that if there is any issue should be analyzed, or the current war on Gaza should be analyzed, it should be analyzed through its historical background. Otherwise, we will be all poisoned by the Zionist, the Israeli propaganda, whom want us just to remember one day in the history, October 7th. October 7th is reality, is it true? We have our opinion as Palestinian Liberation Organization, as President Abbas on this regard. It's a declared opinion, but this is not the starting point of history, and we will not allow anyone to enforce us to think likewise the Zionist movement and their supporter want us to think of it. Our history as Palestinian is deeply rooted thousands of years ago. Our history started long before Abraham, the prophet Abraham, left his birthplace, or the Chaldees, or Al-Iraq today, and came to Palestine. And anyone want to check this history, it's so easy just to go to check the Old Testament, the Jewish Bible, Genesis, first ever chapter, Genesis, verses 21/34, which says, "We sojourned Abraham in the Palestinian land many days." So we are there as a Palestinian, as Canaanite, as land of Palestine, land of Canaan, long time before the prophet Abraham lifted again his birthplace or the Chaldees and came to Palestine. If there is a real title deed, official document that prove we, the Palestinian, is the indigenous people, it is only and only the Old Testament, the Jewish Bible, Torah itself. So at that time, our history was started. So if there is anyone, likewise, the American ambassador in Israel denying our existence and say, who said, of course, that there is no such thing
call the Palestinian people, just we the Palestinian will continue to remind him back to read what is written in Genesis, what is written in the Holy Book, what is written in the Old Testament. This is the very old history. Our name, our explicit name, Falastini, not only Palestine or Palestinian, Falastini, Palestine, Palestinian land, Canaan, Canaani land is repetitive hundreds of times in the Old Testament. So we are there before they came or they reach, and their father Abraham reached our land, Palestine. This is the old history, but the modern history was started in November 2nd, 1917, when your old colonizer, the British, issued the despicable, notorious Balfour Declaration, November 2nd, 1917, and in this declaration, whom have no footprint at our historical land, Palestine, zero footprint, they pledged, they gifted our homeland to the Khazarian Jew. And when we say Khazarian Jew, we mean it. And every one of you have his mobile, he can check what's the meaning of Khazarian Jew, K-H-A, Khazarian Jew. Those are the European Jews whom converted to Judaism 1100 years ago. They are not descendants of Ishaq, Jacob of Israel, but again, British gifted, pledged our homeland to those European Khazarian Jews. At that time, at that exact day, the Palestinian modern misery, the Palestinian modern tragedy was started. And the one who sowed the seeds to all the evil that we are witnessing, you are witnessing, and we are enduring is the British United Kingdom. Then our history moved step forward. Mid-1930s, we launched the first revolution. Thanks God, India was there in our very first revolution. And they helped us, you the Indian people, help the Palestinian at that time. You pledge and you pay a lot of money to the Palestinian revolution mid-1930s. 1947, the United Nations discussed the Palestinian question. And they adopted November 29, 1947, what's so-called the Partition Plan of Palestine, or it's famously known also as 181 Resolution. India, under the leader of the great late Mahatma Gandhi, refused and voted against this resolution. And Mahatma Gandhi said at that time, Palestine belonged to the Palestinian people, likewise England belonged to the British people. Unfortunately, with the logic of power, with the full support of the British mandate and at that time, whom militarized and allowed the Israeli Jewish, not Israeli, at that time it was called Jewish terrorist gang. And when we say terrorist, we mean it. This is the exact name that the British mandate gave it to them. But unfortunately, they allowed them to be militarized to the teeth and demilitarize the Palestinian people. Totally demilitarize the Palestinian people. The Palestinian people used to be hanged to death for one bullet, one knife. In 1948, by the very last day of the
mandate, the British mandate, the Jewish military, the Jewish terrorist gang declared the establishment of a state of Israel, which was fully well equipped and militarized. And they succeeded, even before that time, to expel and to ethnically cleanse thousands and thousands of the Palestinian indigenous people from their homeland. After, of course, tens of terrorist massacres that they conducted it, and any one of you can check Deir Yassin massacre, King David Hotel massacres, and others. So we became, as a Palestinian people, refugees. My late father was born in our original village, Berga, and I personally born in a refugee camp in Gaza. Even my family till today, my entire family, Abu Shawesh family, is still living in Gaza. So we became refugee. 60% nearly of the Palestinian population is living in the diaspora. Then Israel was established on 78% of the historical land of Palestine. The remaining 22%, which is West Bank, including East Jerusalem and Gaza, had been occupied by Israel in June 6, 1967. So I born in a refugee camp under the Israeli occupation rule and still live under the Israeli occupation rule till now. This is the history. So anyone want to tackle the Palestinian issue, he should tackle it from a rational perspective. This is exactly what did the United Nations General Secretary General, His Excellency Antonio Guterres, did in his speech 24th October 24, 2023, when he denounced and condemned Hamas attack October 7th itself. Then he said, but it was not happen in a vacuum, which means he followed the rational school of thought of a problem solving and link 7 October to its root, which is the Israeli suffocating occupation and the Israeli prolonged occupation and the humiliation of the Palestinian people. So again, history for us as a Palestinian is very important, not because we just want to remember, but because we look forward to build our future. We will not allow anyone to enforce us to have Alzheimer. This is exactly what the Israeli is doing right now. They are calling day and night to remove our history and to change our curriculum. We should not teach. They did not want us to teach our student, our school, our student, our child, anything about our history. But even if they want to do so, vast majority of them will born in a refugee camp, and the very first question will be, how come? Why I am in a refugee camp? History will not be erased. I am personally born and educated with a curriculum that was not touching any single word about the Israeli occupation, but I was born in a refugee camp. So I raised to ask, and I born to ask, then I discover, the very first day of my life, I discovered that I am a refugee. So even if they will succeed to change or to enforce, or if they succeed, I mean,
to remove every single textbook, Palestine from every single textbook. Palestine is in our heart. Palestine is yours. Palestine is your history. If they accuse us of being terrorists, I would like just to remind you, the great martyr, Bhagat Singh, was accused of being terrorist. And he was hanged to death because they accused him of being terrorist. So to classify the Palestinian people of being terrorists, they did not invent the wheel. Before them, each one of the occupier worldwide used to accuse anyone resisting them of being anarchist. This is something they accused your ancestor, anarchist. And one very despicable accusation was disgraceful. Could you imagine? They accused part of your ancestor of being disgraceful. You did not thank them for occupying your ancestor, so you are disgraceful. Not only terrorist, but disgraceful. This is something we should all deeply think of it. So when we defend ourselves, when we talk about our history and defend our history, this is your exact history. Don't forget, just 80 years ago, you were there in the shoes of the Palestinian people. Your grandfather was there. And I'm pretty sure he told you something about that. You were there. You're part of the whom lived this unfortunate suffering. In 1919, there is a big massacres conducted against your ancestors. We should remember our history, not only as Palestinian, but as Indian, not because we are going to revenge, but because we want to build a future, a very safe future, that it will not happen again. No one will come to occupy us again. No one will come to murder us. 722 days in a row up to this day. It's a televised textbook genocide. This is the first ever time in history that we as international community, as people worldwide, to watch in our smartphones in a daily pace the ongoing genocide against the Palestinian people. This genocide cannot to be happened without a full complicity of the United States of America. I'm not revealing a secret. This is not a secret. And I'm not attacking the United States of America. The United States of America is attacking the Palestinian people. We are talking about today 150,000 tons of explosive material hit 365 square kilometers. 2.3 million innocent human beings there, living there. We are talking about 75 kilograms of explosive material per capita. Each one of Gaza, his share, 75 kilograms of explosive material. This ongoing and televised genocide was not to be happened without a full complicity of the Western country, at least at the very beginning. Now they are woke up, many of them woke up, and they start believing that this war is to serve, and I would like you to remember what did the fugitive from justice. Fugitive from justice is the wanted man. Benjamin Netanyahu said 2 days in the United Nations General Assembly when he said something none of you might realize the exact deep meaning of it, which is finish the job. Finish the job mean
expelling the entire Palestinian people from the historical land of Palestine. The Israeli believed that in 1948, Ben Gurion had the chance to complete the ethnic cleansing of the Palestinian people from the historical land of Palestine. But he did not. He conducted a mistake and he did not did so. So they used to say that he did not finish the job and we should finish the job. The fugitive from justice, the wanted criminal Prime Minister, Benjamin Netanyahu, loud and clear, repeated 2 days ago in the United Nations General Assembly is to complete the job, which means to expel, ethnically cleanse the remaining 4.2 million of the Palestinians from their historical land, entire historical land, Palestine. This is a very dangerous issue. This is not easy. We should not take it as just wording in the United Nations General Assembly. We should take it in a serious manner. But again, I'm pretty sure that you all had been hijacked by one narrative. All of this is because October 7th. It's not true. Completely, utterly not true. As if our life as a Palestinian people in October 6th was normal life. It's not true. Since January 1st, 2023, up to October 6th, Friday, October 6th, 2023, more than 400 Palestinians, 80 of them is pure children, has been slaughtered, has been killed. Vast majority of them in West Bank, where is there no Hamas. Just at that year, one of them, his name is Muhammad al-Tamimi. I know his father, I know his family. 2.5 years old. They sniped him. They intentionally killed him. Part of us as a Palestinian used to be killed for fun. And many of us had been killed just for the soldier to tape him and to publish it in their social media. This is how the Palestinian life before that morning. Settlement was there, occupation is there, refugee camp is there, tens of massacres even conducted against the Palestinian people after 1948. So life was not, for them, this is the normal life. For us, it's life under occupation, life in a refugee camps, life in a siege, under the siege. Sorry. This is the life of the Palestinian people. But again, when it came to that day, there are, again, just to conclude, there are two schools of thought. The Zionist school of thought, which want us to just know or just believe that there is one day in the history and everything after this day is justified. This school of thought was fully supported by the Western countries at the very beginning, vast majority of Western countries, and by the complicity, of course, of the Western media, so that they used to say that Israel have the right to defend itself. But the question is, did the Palestinians have the right to defend themselves? Did the Palestinians have the right to liberate themselves? No one get close to it. Then they used to say that nothing justified October 7th, which means all the Palestinian misery
does not justify October 7. Again, fair enough. But they should also be fair and say, and October 7 did not justified and should not justify 722 days in row till today of continuous televised, continuous broadcast, continuous massacres, genocide, that each one of you already watched part of it. But no one want to shed light on this issue, just this, I mean, the Zionist school of thought. But there is an rational school of thought which say that if you want to analyze any event, any historical event, which is that day is already gonna change the human history. Gaza is already changed the human history. So anyone, the rational school of thought is saying that any problem should be tackled from its root symptom analysis. This is the rational school of thought. To talk about the Palestinian question, there is many issues to tackle it. But again, I would like to extend my sincere thanks to the organizer of this event for giving me the opportunity to shed light on part of our history, on part of our misery as a Palestinian people. And I would like to extend many thanks for all of you for coming today, of course. Wish you all the best. And we will continue, of course, together, because we have one shared human future. We will continue together to raise our voice as a human being, as a human believing of one shared future, because again, no one is safe until everyone is safe. I thank you so much. Thank you so much. Thank you. हाँ, नमस्ते साथियों, मैं एक बहुत ही शॉर्ट में अभी जो एम्बेसडर साहब आके बोल के गए हैं उसका एक जिस्ट देना चाहूँगी। वो जितना अच्छा बोले हैं और इलोक्वेंटली बोले हैं उतना तो करने की मैं कोशिश भी नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा बस जैसे हमारे साथी समझ सके कि उन्होंने क्या बोला है। तो एम्बेसडर साहब ज़्यादातर गाज़ा के इतिहास के बारे में उन्होंने बात की, और शुरुआत में उन्होंने जो भी धार्मिक इतिहास है जिसको लेके काफ़ी चर्चा होती है वहाँ से शुरू किया। और हमें ये याद रखना होगा कि इज़राइल जो लगातार क्लेम करता है कि वो उनका क्यों हक है पैलेस्टाइन में रहने का और पैलेस्टीनियंस को इतनी बुरी तरह से लगातार मारने का, वो सब चाहता है, इतिहास को ही वो बार बार कोट करते हैं। तो लेकिन समझना ज़रूरी है कि इतिहास क्या है आखिर में। क्या इज़राइल जो बता रहा है ज्यूज़ का इतिहास पैलेस्टाइन को लेके, क्या वो सच है या नहीं, और उसके बाद जो जो इज़राइल ने किया है वो उसको करने का हक था कि नहीं। तो उन्होंने पूरे धार्मिक इतिहास के बारे में बताया, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन किस तरह से ज्यूज़ बोलते हैं कि सबसे पहले वो आए थे, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस वहाँ पे रह रहे हैं अगर देखें तो वहाँ की जो जनता है उनके एंसेस्टर्स उससे पहले से वहाँ पे रहे हैं हमेशा से। तो वो जो पूरा इतिहास बताया जाता है वो एक बहुत ही सिलेक्टिव हिस्ट्री के तहत बताया जाता है।
लेकिन उन्होंने कहा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि मॉडर्न टाइम्स में जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उस समय में उन्होंने पूरा ब्रिटेन के रोल के बारे में बताया कि जिन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाया उन्होंने ही क्या किया पैलेस्टाइन के साथ भी, कि 2 नवंबर 1917 वो एक तारीख थी जिस दिन ब्रिटेन ने एक तरह से पूरा अनाउंस किया था कुछ ट्रीटीज़ के ज़रिए कि वो पैलेस्टाइन में यूरोप के वो जूस को दिया जाएगा, और उसके बाद उसने एनकरेज किया कि यूरोप में जो जूस थे वो वहाँ से आके बसना शुरू करें पैलेस्टाइन की टेरिटरीज में। और ये हम सबको पता है कि क्या हालत थी यूरोप में जूस की, तो वो उन्होंने वहाँ पे जाके जूस का एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करने की जगह उन्होंने कहा कि आप जाके एक दूसरी टेरिटरी जिस पे वो कभी भी रहे भी नहीं थे वहाँ को उनको कहा कि आप जाके रहो, और एक्टिवली उस चीज़ को प्रमोट किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के पास ये सारा मुद्दा गया और संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 स्टेट बनाने की कोशिश की पैलेस्टाइन पैलेस्टीनियंस के हक अलग रख के। लेकिन इन्हीं सब के चलते चलते 1948 में जिसको नकबा बोला जाता है वो हुआ, जब किसी ने भी नहीं रोका, जब जूस की एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है ज़ायोनिस्ट, उन लोगों ने बिल्कुल सेटलर कॉलोनिज्म के अंतर्गत अपने ही प्राइवेट आर्मीज़ के थ्रू ले के सारे वेपन्स वगैरह मारा पैलेस्टीनियंस को, और एक बहुत बड़ा तबका पैलेस्टाइन का वहाँ से उनको मार के या तो निकाला गया या उनको अपने ही देश में रेफ्यूजी बना दिया गया। आज की तारीख में इन सब चीज़ों के चलते 60% पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, और एम्बेसडर साहब खुद ही एक उसी रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए थे और वहीं पले बड़े। तो उन्होंने कहा यही हमारा इतिहास है और इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आने वाला समय कैसा रहेगा इसको भी तय करता है। अब इजराइल चाहता है कि पैलेस्टाइन का इतिहास मिटा दिया जाए, लेकिन जब भी कोई बच्चे पैदा होते हैं रेफ्यूजी कैंप में तो वो ये सोचते तो है ना कि हम लोग रेफ्यूजी कैंप में क्यों पैदा हुए, तो आप इतिहास इस तरह से मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सही इतिहास बताया जाए उन बच्चों को भी और बाकी दुनिया को भी, और वही उनकी कोशिश है और वही उन्होंने अपने पूरे इस आज के भाषण में बोलने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मतलब भारतीय लोग समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है पैलेस्टाइन में, थोड़ा अगर कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ भी 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था और जिस तरह से अंग्रेज़ों ने किया था वही चीज़ चलती आ रही है साल दर साल, डेकेड्स से, अब तो मतलब सेंचुरी का लगभग हो गया है जो पैलेस्टाइन के साथ किया जा रहा है। और वहीं से अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया था, और शुरुआत पैलेस्टाइन की भी जो मिज़री की सारी शुरुआत है वो भी अंग्रेज़ों की तरफ से ही हुई है। और इसीलिए लेकिन इतिहास सबको याद रखना होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पैलेस्टीनियन है इसलिए पैलेस्टीनियन याद रखें, लेकिन इंसान होने के नाते हर इंसान को याद रखना होगा कि पैलेस्टाइन के साथ क्या क्या हुआ है, और कोशिश करें कि अब कम से कम रुक सके। फिर आगे वो बोले कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कि एक नरसंहार हो रहा है जो हम सबके सामने हो रहा है, हम लोगों की स्क्रीन्स पे चल रहा है, हमारे टीवी पे, हमारे मोबाइल स्क्रीन्स पे, जो भी स्क्रीन है उन पे वो नरसंहार चल रहा है, और ये 2 साल से हर दिन लगातार चले जा रहा है और फिर भी नहीं रुक रहा है। तो इसका अगर पश्चिमी देशों की इसमें भूमिका नहीं होती इस नरसंहार को सपोर्ट करने में तो ये नहीं हो सकता था। तो जब वो मुमकिन नहीं था तो ये हम समझ ही सकते हैं कि पश्चिमी देशों का कितना बड़ा हाथ है इस पूरे नरसंहार में। अब उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो जाग गए हैं और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब रुके, और अभी हमने देखा है कि कुछ देशों ने रिकग्नाइज भी किया पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट, जो अभी तक नहीं किया था। ब्रिटेन भी शामिल है उसमें। लेकिन इजराइल इन सब चीज़ों के बावजूद मान नहीं रहा है। इजराइल का एक बहुत ही पुराना ज़ायोनिस्ट लीडर था बेन गुरियन, उसने कहा था कि उसने शपथ ली थी कि वो पैलेस्टाइन को ख़त्म करेगा और वहाँ पे जूस का साम्राज्य बसाएगा। नेतन्याहू चाह रहा है कि वो जो पूरा नहीं कर पाया बेन गुरियन उसके काम को आज पूरी तरह से ख़त्म करे, मतलब उसको अंजाम दे, और वही इजराइल करने की अभी कोशिश कर रहा है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर आप पैलेस्टाइन में हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अपने मज़े के लिए इजरायली सोल्जर्स और बाकी लोग आके पैलेस्टीनियंस को मारते हैं, सोशल मीडिया पे डालने के लिए वीडियो बनाते हुए पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं। तो ये है
पैलेस्टीनियंस की सच्चाई और जो इजरायलियों के लिए अब दूसरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ हो गई है, वो पैलेस्टीनियंस के लिए कितनी दर्दनाक और दर्द भरी ज़िंदगी है। तो ये सब का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इन सब चीज़ों के खिलाफ। और उन्होंने बस यही एंड में बोला कि गाज़ा ने इंसानी इतिहास बदल दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके साथ जो जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है, पर जिस तरह से वो खड़े हैं अपने हकों के लिए और अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, उसने भी इंसानों को एक अलग तरह से अपने इतिहास को देखने की हिम्मत दी है। थैंक यू। I was just translating in Hindi. Couldn't do a very good job, but tried. Yes. Whether you have Alzheimer's or not is a different issue. But the thing is, history, forgetting history, you're compelled to forget history. ये केवल पैलेस्टाइन को लेकर ही नहीं, हमारे देश में भी चल रहा है। इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, नए इतिहास साबित करने की कोशिश की जा रही है। खैर, बहरहाल वापस हम पैलेस्टाइन पे आते हैं। पैलेस्टाइन में हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हतीम अल सक्का। ही इज़ ए कम्युनिटी एक्टिविस्ट फोकस्ड ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज। ए डिसेबल्ड पर्सन owing to being a he's a deaf person of short stature actually. He is currently working with an international organization on nutrition programs in Palestine, and also where various other issues also is taking up. हतीम, as I said earlier, मैं शुरुआत में जैसे कहा था, कोशिश करेंगे इस 2 घंटे के दरमियान कि पैलेस्टीन की हालत वहाँ की लोगों के मुंह से सुने, ताकि हम ना बोले, वहाँ के लोगों से सुने। हतीम, if you join us, please try to speak on what is the situation currently in Palestine as far as disabled people are concerned. What are after once a genocide? Even I know even before disabled person had a very bad situation there. Various issues were there. The continuous attacks that were taking place by Israel over the number of years actually had created a lot of disabled persons also. In this situation, in the situation of genocide, what is the situation, what is the problems that disabled people are facing? Could you please tell us? We'll give you 10 minutes, please. We can't hear you. Hello. Can you hear me now? Hello. Yes. Thanks for the organization event in Palestine. My name is Haitham Saqqa, and I am a person from Khan Younis in the country. With an international organization community and on the morning of 5 of October 2023, I was sitting with a group of disability activists, finalizing its initiatives aimed at enhancing accessibility and the protection for persons with disability in society. The first initiative advocated for use of sign language in emergency department of hospital and in the government
हाँ, हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हैथम साहब सीधे सीधे हेलो। हाँ, अब आवाज़ आई। हाँ, सीधे गाज़ा से ही ज्वाइन किया है ऑनलाइन, और उन्होंने बेसिकली हम सबको आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? हाँ। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके राइट्स का, उनके हकों का पूरी तरह से हनन हो रहा है, और जो पहले भी इसराइल करता था, लेकिन अभी जिस तरह की जो जेनोसाइड चल रही है उसमें वो किस लेवल पे कितना बढ़ गया है। और उन्होंने हाँ, उन्होंने वहीं से शुरुआत की कि पैलेस्टाइन की जो सरकार है वो कुछ समय से कोशिश कर रही थी कि जो लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ रहते हैं उनके हकों पे काम किया जाए, चाहे फिर वो पैरालंपिक्स में के लिए टीम को तैयार करने की बात हो, या स्पोर्ट्स भी हैं, या बाकी किस तरह से भी जो एक्सेसिबिलिटी जिस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए उस पर कुछ कुछ काम चल रहा था। लेकिन जब से अक्टूबर 2000 उसके बाद तारीख में 30,000 लोग हैं गाज़ा में, 30,000 जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जो किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं और उनको फिजियोथेरेपी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसराइल ने सारे अस्पताल ही उड़ा दिए हैं और उन पे बम गिरा दिए हैं, तो लोगों को अपनी फिजियोथेरेपी भी नहीं मिल रही है। ये सबसे बेसिक चीज़ थी। उसके अलावा जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तो मिल ही नहीं रहा है। साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जिस तरह का नरसंहार चल रहा है उसमें जो मेंटल हेल्थ लोगों की इतनी ख़राब हो रही है, उसके लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सब सुविधाएं बिल्कुल भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं वहाँ पे। और इस सब का जिम्मेदार है इसराइल, और उसने जो पूरी तरह से एक जेनोसाइड शुरू कर रखी है वो। और उन्होंने फिर आखिर में यही बोला कि जो भी एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होता है, सम्मान से जीने का हक, वो अभी फ़िलिस्तीनियों का पूरी तरह से छीन लिया गया है। अपने अगर आपके को किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है और आप उसका इलाज चाह रहे हैं, वो तो अभी कोई सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ किस तरह से हम जिए वहाँ पे बात आके खड़ी हो गई, सर्वाइवल पे बात आके खड़ी हो गई है। तो उसके आगे का जो होती है एक अच्छी ज़िंदगी, उसके बारे में तो सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा है। सुविधाओं की तो बात ही भूल जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान से जीने का हक है और फ़िलिस्तीनियों को भी वो मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू हैतन। ऑडिबल? आवाज़ नहीं आ रही, मैं उसी से बात करता हूँ, एक ही चले। हेलो, हाँ। थैंक यू हैतन। नाउ वी गो टू रज़ान अल सक्का। दूसरी एक बड़ी समस्या जो आ रही है, दरअसल पहले भी थी, दरअसल इस जेनोसाइड के चलते हुए गाज़ा में, इज एक्चुअली कॉल्ड मेंटल ट्रॉमा। एक्चुअली on a mass scale, actually, people of Gaza are actually facing mental trauma. And we have with us Razan, who's a counselor, mental health counselor. Razan is from Khan University, and she's also a doctor, by the way. Actually, Razan is a psychologist working with Palestinian as a counseling center, actually. She's also involved with various organizations for the protection of sexual abuse and exploitation of women. Razan, online, please.
I'm going to summarize what she has delivered. She is starting. She has started. Okay. My name is Razan Saqqa, a 29-year-old Palestinian from Khan Yunus, in the heart of Gaza. I have lived every moment of life within its street, shaped by struggle and pain. Despite growing up under occupation and surviving 5 wars, my determination never faltered. From a young age, I faced bullying and discrimination due to my short height, including from a university professor who claimed I could not practice psychology, but I pursued my passion, studied psychology, and graduated, driven by a deep desire to help others navigate trauma and pain. I began working with the Palestinian Counseling Center, offering psychological support to individuals and families affected by war and displacement. My work became more vital than ever after October 2023, when Gaza descended into the darkest period. I was displaced multiple times. My neighborhood was destroyed. I lost close friends and loved ones. I survived famine, bombardment, and loss, experiences that left a deep impact on my mental and physical health. Displacement forced me to leave behind not only my home, but memories, my identity, and my sense of safety. I realized home is not just a wall, but the stories, scents, and sounds that shape us. Being shot added another level of challenge, but I pushed through, determined to demand respect and dignity through my action and service, even amid war. My daily work shifted to visiting overcrowded tents where privacy and basic dignity were absent. I created safe spaces for women to speak freely and helped children express their fear through play and art. I organized community-wide recreational days, moments of relief and joy that become rare but necessary. I work with children suffering from post-traumatic stress disorder, nightmares, and severe anxiety, many of whom live without clean water, food, education, or medical care. Their daily exposure to death and destruction is not just trauma, it's a genocide of present and future. Despite these challenges, I continued even when conditions made it nearly impossible. Many I work with had lost homes, limbs, or family members. In a place where trust and security were shattered, I earned the community trust through consistency and care. People began to ask for me, wait for me, and include me in their personal and communal moments. A sign that psychological support became essential. Breaking the mental health stigma, especially for women, was a crucial part of my mission. In our conservative society, seeking psychological help is often misunderstood or looked down upon. I work to normalize it's a fundamental human right, encouraging people to see mental health as a vital to dignity and survival. My role expanded beyond psychology to include emergency humanitarian work. I helped to deliver clean water to displaced families using pipes and barrels, ensuring that hundreds had access to basic necessity. This initiative also protected girls and women from risking while searching for water. I coordinated with community kitchens to organize food distribution, involving local youth and children to create a sense of unity and safety. These efforts were not just survival strategies, they were acts of resistance, preserving dignity and building community resilience. Through it all, I learned that resilience is not about physical strength, but the will to continue. My work became a voice against silence, destruction, and despair. I send this message from the heart of Gaza. Do not stop at words. Do something today. Share Gaza's cry with the world. Resist to protect human rights and do not just sing about them. Do not leave Gaza alone. Gazans are an essential part of humanity, and history will not forgive those who turn a blind eye in the crimes committed, who leave people facing famine, displacement, loss,
cleansing and genocide without protection or support. History will hold accountable all who did not stand against this injustice and those who ignored this cleansing and genocide. Be with us, speak, act, and show solidarity. Be the voice of hope and the part of protecting humanity, because Gaza's resilience is the resilience of every human on this earth, and we deserve to live. जो उन्होंने कहा उसको हम थोड़ा हिंदी में समराइज़ करने की कोशिश करते हैं. रज़ान नाहिद अस्सक़ा ये फ़लस्तीन में वहाँ पे खान यूनुस में रहती हैं और ये साइकोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने ख़ास तौर से लगे होते हैं, क्राउडेड टेंट होते हैं, ये वहाँ पे जाती हैं और जो लोग साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रामा से गुज़र रहे होते हैं उनकी देखभाल करती हैं. तो इनका ये पैलेस्टीनियन काउंसलिंग सेंटर के अंतर्गत उसके तहत काम कर रही थी और स्पेशली जब अक्टूबर 2023 से जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया. फिर ये वहाँ जाती हैं, स्पेशली बच्चों को और महिलाओं के उनके साथ जो देखती हैं कि वो लोग वहाँ की बेसिक जो ज़रूरियतें हैं, खाना पीना पानी, इन चीज़ों से भी वो महरूम होती हैं. तो इन चीज़ों के ज़रिए उसकी हेल्प करती हैं. Thank you, Razan. It was a very powerful message that you gave to all of us. Now we go to the next speaker, who is actually from West Bank, Ziad Amro. Ziad Amro is the president of the Palestine Association of Persons with Visual Impairment, a human rights activist who has been involved in negotiations on the Convention of Rights of Persons with Disabilities for many years. Amro has also been on the Independent Commission for Human Rights on the Rights of Persons with Disabilities. He has been constantly writing on disabled under the occupation and genocide. Over to Ziad. Yes, Ziad. People. My voice is clear? Yes.
are not allowed, even if they are not destroyed, mostly are destroyed. If they are not there, if they are not destroyed, they are not allowed to intervene. Money and food and clean water and access to sanitation, access to transport, and everything for people with disabilities become more and more kind of impossible. No persons with disabilities can easily get food like other people if it is available. Mostly it is not. Or to avoid causing any harm to persons with disabilities who are living under foreign occupation. And of course, this applies to all civilians. But as you know, 90% of the victims of the Israeli aggression, the United Nations and the Americans' aggression on Palestine is deliberately not taking any measures to avoid killing or injuring or harming civil entities or individuals who are civilians. And this is why I'm really calling upon all the free people of this world to come together on the 15th of October. We are in Palestine and Jordan are organizing free motorbikes rides in order to raise the issue of persons with the visual impairments in Gaza on the 15th of October, which is the International White Cane Day, to raise the issue and to show solidarity with blind people in Gaza. Blind people are going to ride motorbikes together with sighted persons in Jordan, in Palestine till now, and believe other countries in the East and West, in order to raise the issue and to call upon the world to intervene to protect civilians, mainly blind people, also people with disabilities in general in Gaza. And we are trying to make stand-ups everywhere
in the world in as much as we can in order to show people with Gaza we have not forgotten them. We are making a lot of efforts in order to stop this genocide. Another thing, I believe we have to come out with an international petition that goes to the whatever international organization, which I believe are made now, and they are like the United Nations Security Council is totally and deliberately is a member or a partner with the genocide, because if they are not, if they are supposed to be there making their job to protect the security of the people in the world and to keep the peace in the world, and they cannot do this, they are partners. They can do it, but they don't want to do it. Mainly the 5 permanent members. And here we have to try as people of the world, not as governments only, to increase the number of permanent members, or even to stop all these countries from having the 5 countries permanent members having the veto. So we, the people of the third world countries, so-called third world countries, are supposed to protect ourselves by these actions or by the Security Council. The other thing that the years of occupation, in my opinion, justifies what happened in the 7th of October. But the 7th of October doesn't justify 2 years of slaughtering and orgy killing of civilians under the sight of all the countries of the world. And finally, I'm going to say, I praise all my people, all my colleagues, people with disabilities all over the world, all the free people of the world who are standing up and shouting against these war crimes. And I really salute all the people participating in the boats demonstration. The boats are going to give hope to people of Gaza. And I believe if we come together, we work together, as we believe, as the old people of India decided that from the first minute that all people with disabilities deserve dignified life like everybody, and we can spread all this word together to the world and work together hand in hand to stop this genocide, collaborating with the free people of the world. Thank you very much, and I'm really happy to be able to speak to you and to work together with you, and we are open to any kind of cooperation in order to serve all people with disabilities issues all over the world. Thank you. थैंक्स ज़ियाद। सलाम साथियों, संक्षेप में ज़ियाद साहब ने जो है हम लोगों को ये बोला कि एक कन्वेंशन है अब आवाज़ आ रहा है साथियों? एक कन्वेंशन है CRPD, उसके अंदर बोला गया है कि सबकी जान की अहमियत है और सबको जो है एक डिग्निफाइड लाइफ मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर कोई बाहरी आदमी आक्रमण करके उस जगह पे कब्ज़ा कर लेता है, उसके अंदर भी आपको वो जो है हक मिलने चाहिए जीने के। तो वो कन्वेंशन कहाँ है? जो उन्होंने अंत में बात बोला कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि ये क्राइम रोकने चाहिए, बट उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय याचिका इसमें लिखनी चाहिए कि या तो आप काम करो और नहीं कर रहे हो तो आप इस क्राइम के भागीदारी हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो 5 देशों की जो एक वीटो पावर है, इसको चैलेंज करने का भी बात जो है ज़ियाद साहब ने रखा। और उन्होंने कुछ नंबर बताए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में 17,000 लोगों का जो है किसी न किसी शरीर के भाग को काटना पड़ा है, एम्पुटेशन हुआ है।
1700 लोगों की आँख की रोशनी चली गई है और हजारों से ज़्यादा लोग हैं जिनको गोलियों से चोट लगी है और वो गोलियां अभी भी अंदर हैं क्योंकि उनको निकालने की सुविधा नहीं है। सन 90 से 1990 से जो उन्होंने संस्थान बनाए थे वो सब खत्म हो गए हैं या तोड़ दिए गए हैं। बाहर की जो संस्थाएं हैं रेड क्रॉस जैसी, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने और भी बड़ी बात बोली कि स्वाद से पहले खाना, सफाई, पानी ये भी नहीं मिल पा रहा है। और उनका ये कहना है कहीं गलती से खाना मिल भी जाता है तो जो डिसेबल्ड हमारे दोस्त हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। 100 आदमी में 10 का खाना है, उसके लिए लड़ाई होती है। और एक बात जो इन्होंने भी रखी, इससे पहले स्पीकर ने भी रखा, उन्होंने कहा कि ज़मीन पे क्या स्थिति है, इससे ज़्यादा क्या बताऊं कि माँ बाप को ये फैसला लेना पड़ रहा है एक बच्चे को छोड़ दो क्योंकि वो विकलांग है, क्योंकि दूसरे बच्चे की जान बचानी है। अगर ये ज़मीनी हकीकत है तो इसके बाद कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बात रखा कि वो शुक्रिया करना चाहते हैं आप और हमारे जैसे साथियों का जो इंडिया में बैठे हैं। उनका कहना है आप लोग जो ये कर रहे हैं इससे उनको उम्मीद मिलती है कि एक दिन कुछ ना कुछ बदलेगा और ठीक होगा। Now I would like to call upon Vijay Prashad. He is joining us from Paris, and Vijay is an Indian historian and journalist. A lot of people in the audience do know him because he has been writing about the third world, the global south, and the struggles that have been waged in the global south for a long time. He is the author of 40 books, including some written in collaboration with Noam Chomsky. Prashad is the executive director of Tricontinental Institute for Social Research, and he is also a correspondent for Globetrotter. He's an editor at the Leftward Books, based in New Delhi, at Inkani Books, Johannesburg, and at La Torcha, Chile. He has appeared in 2 films, Shadow World and 2 meetings. And he's been, of course, writing a lot on the Palestine issue. Again, some of us might have read his work. So, Vijay, yeah, thank you. Yeah. Hello, can you hear me? Out of Beirut, Lebanon, where I visited the southern part of Lebanon, which continues to get bombed by Israel. Israel, in fact, the day that we visited one of the villages in South Lebanon, killed 9 people, 7 of them children, and injured any number of people. Very hard to say how many people were injured. The Lebanese countryside in the south has been almost utterly destroyed. There are villages upon villages which are just ruins, and almost the entire population has become refugees. It's important to understand that Israel has not only been conducting this violence against the Palestinians in Gaza, the genocide, but also has attacked the sovereignty of 7 countries, including Syria, Yemen, Qatar, Lebanon, and so on, without any sanction from anybody. You know, there's a million things I'd like to talk about. I'd like to talk about, for instance, the fact that in 2014, when I was in Gaza right after the bombing, the 2 things that struck me were families talking about the enormous noise of the bombardment, something I'd experienced in Iraq as well. Noise is extremely traumatic. It traumatizes young people for generations. And the second thing is the dust. You know, modern buildings are built of extremely toxic materials. And when you drop a bomb, which itself is toxic, on top of a modern building, it generates toxic dust that flies around and impacts the
a pulmonary system of millions of people, and has long-term impacts on people's ability to breathe, to have various respiratory challenges, and so on. I don't want to spend my time talking about that. I want to talk about two other things, two reports really. One was released by the UN Special Rapporteur on the Palestinian territories. Her name is Francesca Albanese. This is a report called Anatomy of a Genocide, where Francesca looks at the complicity of corporations, Western corporations, in this genocide. Yes, as the ambassador said, through the illegal settlement program, been stealing land, a list of very large corporations that have been benefiting directly, financially benefiting from the genocide. At the top of this, again, to repeat, are the telecommunications and internet digital companies such as Amazon, whose web services and cloud services has been used by the Israeli military, in its artificial intelligence use of targeting and so on. Google, whose founding CEO Eric Schmidt has himself written about his close involvement with the U.S. military and with the U.S. surveillance systems. I highly recommend a read of the UN Special Rapporteur Francesca Albanese's report on the anatomy of genocide to show the complicity of large Western companies. But as it happens, there's a new report just out in India. It's called Profit and Genocide, Indian Investments in Israel, written by Hajira Puthige. This is a report produced by the Center for Financial Accountability. Very interesting points made in this report. It's just come out. 5 points for you. Number one, Indian corporations involved in Israeli military operations. The principal one is Adani Elbit Advanced Systems. They have been involved in producing the Hermes 900 drone. Adani Ports, which acquired Haifa Port, used by Israel for its submarine fleet, but also for its motorboats, which would be going out there to attack the Gaza Samud flotilla. So number one is Adani Elbit Systems. Very much should be written about in the Indian media. Secondly, Tata Consultancy Services, Infosys, and Reliance Jio, all providing support for Israel's digital infrastructure used in targeting and for mass surveillance. Part of this Gaza Humanitarian Foundation's killing. What is the hand of Reliance Jio Systems? What is the hand of Tata Consultancy Service in this? This report begins to show us, to start with asking the initial questions. Journalists should be peppering the Ambani family, the Tata family, asking them, what is your complicity in the genocide? Number three, Jain irrigation, involved in the Israeli settlements in the West Bank and Golan Heights in the effective ethnic cleansing of Palestinians from the West Bank. Jain's subsidiary, Nandan Jain, is directly involved in the Israeli project of the extermination of Palestinians in the West Bank. Questions need to be asked of Jain irrigation. Number three, there are a number of Indian companies involved in recruiting Indian construction workers to go to the West Bank to participate in illegal settlements. Got to think about that. I mean, I can go down the list here, but I don't want to waste your time. I want to ask you to go and read this report. I want to ask the Indian media whether it has the courage not only to condemn, Western corporations or to condemn the British government for providing surveillance systems through the Cyprus airport or to condemn Israel itself,
But will we ask questions about Indian complicity? Will we ask the Adanis, the Ambanis, the Tatas, their role in the murder, the genocide of hundreds of thousands of people, not only who've been killed, but wounded, traumatized? The largest number of child amputees in the world are now in Gaza. They don't just amputate themselves. They were amputated by weapon systems created by Adani, Ambani, Tata, all Indian companies. Take a look at them. Taking a look at them might make us take a look at ourselves. Thanks a lot. हैं, सुन रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के बारे में, लेकिन भारतीय कंपनियां भी हैं जो पूरी तरह से कॉम्प्लिसिट हैं, जुड़ी हुई हैं जो इसराइल में मैसेकर चल रहा है उसके साथ। तो शुरू करते हुए विजय बोले कि कैसे इसराइल ने सिर्फ गाजा में जेनोसाइड नहीं किया है, 7 देशों की पे उसने हमला किया है और उनकी सॉवरेनिटी पे हमला किया है। लेबनान, कतार और बाकी हम देशों के बारे में पढ़ते रहे हैं बीच बीच में कि किस तरह से वहाँ पे भी बम गिराए गए हैं। और शुरू में विजय बोले कि वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन 2014 में जब वो पैलेस्टाइन में थे तो वहाँ पे उन्होंने सुना, किसी ने कहा कि जो बम गिरते हैं और जो होता है इतनी जो आवाज़ होती है वो एक अपने आप में काफ़ी डराने वाली चीज़ होती है। तो आप पे बम नहीं पड़ा है लेकिन आप सुन रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है। जो बम गिरने से डस्ट निकलती है वो काफ़ी लोगों को परेशान करती है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है उस जगह जो लोग रह रहे होते हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि आजकल की जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें जो मटीरियल यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है और वो लोगों की नाक में जाता है, लंग्स में जाता है, वो उनको किस तरह से परेशान करता है। और उसके बाद विजय ने 2 रिपोर्ट्स के बारे में बात की। एक रिपोर्ट है फ्रांसिस्का एल्बनीज़ी की जो संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल रैपोर्टर रह चुकी हैं, और उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकस्टोन और भी कई बड़ी बड़ी नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ट्रांसनेशनल कंपनियां हैं जो अपनी सर्विसेज देती हैं इसराइल को, वो जिससे कि वो ये सारा नरसंहार कर सके मास सर्विलेंस के लिए। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, रियल एस्टेट कंपनियां जिन्होंने जाके पूरा जो इसराइल ने अपनी जो एक सेटलर कॉलोनी बनाई है कि फ़िलिस्तीनियों को निकाल के और वहाँ पे घर बना देना, ऑफिसेस बना देना और उसमें इजरायली जाके रहने लगते हैं, वो बनाने में मदद की है। और वो सब जाकर हमको ये भी देखना चाहिए कि इन कंपनियों का क्या रोल है। फिर उन्होंने बताया, लेकिन अभी एक बहुत ही नई बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो भारत की जो कंपनियां हैं उसके बारे में उस रिपोर्ट में लिखा गया है और काफ़ी चौंका देने वाली और उसमें एक तरह से खुलासे हैं, पूरी रिसर्च रिपोर्ट है। और उसमें है कि एक तो जो इसमें जुड़ी हुई हैं अदानी की कंपनी, मतलब ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन किस तरह से अदानी की जो कंपनियां हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। ख़ास तौर से अदानी के ड्रोन्स, तो जिन ड्रोन से को ले जाके मारा जा रहा है और बम गिराए जा रहे हैं गाज़ा में, वो हैं जो अदानी की कंपनी ने बनाए हैं। अदानी पोर्ट्स, वो जाके जैसे अभी आप लोगों में से बहुत लोग सुन रहे होंगे, समुद्र फ्लोटिला एक चल रहा है कि काफ़ी लोग जाके शिप्स पे जाके कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा तक पहुँचे और वहाँ पे खाना, दवाइयाँ और ये सब कुछ पहुँचाएं, और उन पे किस तरह से इसराइल अटैक करता है। तो जो अदानी की कंपनी है जो इन्वॉल्व है इस चीज़ में कि वो जाके समुद्र फ्लोटिला नहीं पहुँचे गाज़ा तक, वहाँ के बच्चों को खाना नहीं मिले, वहाँ के बच्चों को एनेस्थीसिया दवाइयाँ नहीं मिले, वो कर रहा है।
टाटा, रिलायंस, जैन इरिगेशन, ये सारी ऐसी कंपनियां जो भारत की हैं जिनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इसराइल में। तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि हम लोगों का काम है, हम एक तो पढ़ें ये रिपोर्ट खुद, मेरे ख्याल से हम शेयर कर पाएंगे आने वाले दिनों में, मतलब इसके बाद, मीटिंग के बाद, लेकिन हम पूछें खुद अदानी, अंबानी, टाटा, रिलायंस से कि आप ये जो कर रहे हैं ये कैसे कर पा रहे हैं। तो हम उनको की अकाउंटेबिलिटी पे बात करें, और हम अपने मीडिया को भी पूछें कि वो ये रिसर्च क्यों नहीं कर रहे, वो ये सारे खुलासे क्यों नहीं कर रहे, या इन्वेस्टिगेट करके और उसके बाद इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों से क्यों नहीं पूछ रहे कि आफ्टर ऑल वो कैसे इसमें लगातार मतलब एक इतनी बड़ी रोल प्ले कर सकते हैं जो भी गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से मोर और लेस विजय ने यही बोला है। थैंक यू विजय। So next I would like to invite Ma'am Radhika Alkazi. Ma'am, she is the founder of Astha, which is an organization which has worked with children with disability in very difficult circumstances, and she has been working in this for 35 years. She also documents the status of children in education through her reports. So next speaker हमारी राधिका अलकाजी हैं, जिनका एक संगठन है आस्था, जो पिछले 3 दशकों से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनको डिसेबिलिटी है और जो काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, और वो बच्चों का जो स्टेटस होता है पढ़ाई लिखाई के मामले में उस पर भी रिपोर्ट्स पे काम करती हैं। सो थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनाई दे रहा है? ये ठीक है? हाँ, और नहीं? अब सुनाई दे रहा है? अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम राधिका अलकाजी है और मैं लिख के लाई हूँ जो मैं बोलना चाहती थी आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ठीक से बोल ना पाऊँ। ये आज की इस मीटिंग में गाज़ा से कुछ साथियों से सुनकर क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, सारी जो सोसाइटीज़ हैं समाज के, वर्ल्ड के, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से बेहतर हमारी बच्चों की ज़िंदगी हो। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो खुशहाल रहे, और माता पिता सब चीज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये तो हम सबको पता है, पूरे हमारे ही देश में नहीं, सब विश्व के जो सारे देश में बच्चों की बहुत अहमियत है। किंतु यहाँ से ही, मैं अभी दिल्ली की थोड़ी बात करूँगी, यहाँ से ही करीब 8 किलोमीटर दूर एक छोटी लड़की है जिसे टीबी हो गया और उसके स्पाइन में टीबी हो गया। उसका ऑपरेशन हुआ और पैरालिसिस हो गया, और वो स्कूल जाती थी, लोग बच्चों से खेलती थी, और ये सब बंद हो गया। वो घर में बैठी हुई है और आगे बढ़ने के लिए उसके माता पिता के पास कोई संसाधन नहीं है, तो वो यहीं पे है। ऐसे जब कोविड हुआ था, आप सब यहाँ थे, हम सब यहाँ थे, हमें पता है कि ऐसे दिल्ली में स्कूल्स में खाना बट रहा था, और हमारी एक माँ थी जिनकी 2 बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा विकलांगता है, उनको बहुत सहायता की ज़रूरत है, और वो दोनों बच्चों को कैसे उठा के ले जाएं खाने के लिए, ये एक मुश्किल चीज़ थी उनके सामने। कोविड से पहले ही आपको पता है दिल्ली में दंगे हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, और हम सब जो वहाँ काम विकलांग बच्चों और लोगों के साथ काम करते हैं, हम वहाँ गए थे, और हमारे आँखों के सामने हमने देखा कि हमने तो सिर्फ 4-5 बच्चे देखे जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी और जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। विकलांगता और कुपोषण का तो बहुत बड़ा एक गहरा संबंध है। हमारे यहाँ ही करीब 9 साल के बच्चे हैं जो 3 साल के बच्चे लगते हैं, क्योंकि
बहुत सालों से उनको खाने में मुश्किल है, और उनको जब खाने में मुश्किल है, माँ को किसी ने बताया नहीं कि कैसे इस बच्चे को खिला सकते हैं, तो वो बिस्किट और दूध पे ये बच्चा पल रहा है। मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ? ये सारी चीज़ें, ये जो आपदाएं हैं, छोटी या बड़ी आपदाएं, ये हमारे इर्द गिर्द हर रोज़ होती हैं, और कई बार हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता है। पर जब इस तरह की आपदा होती है, जहाँ व्यक्ति व्यक्ति को ही मारता है, जहाँ एक युद्ध होता है, जहाँ हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल हों या आगे बढ़ें, या हमारी कोई भी कुर्बानी हमारी मानवता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और जो हम कुपोषण की बात कर रहे थे अभी, वो भूख बनी हो जाती है, जैसा कि हमारे साथियों ने हमें बताया। हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मुश्किल होती है अपने खाना पीने में, तो उनको चाहिए एक अलग तरीके का खाना, उनको चाहिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। बस इन स्थितियों में जहाँ पे एक युद्ध हो रहा है या लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जहाँ पुनर्वास की कोई आशंका ही नहीं, कोई आशा ही नहीं है, वहाँ इस बच्चे का क्या हालत होगी, हम शायद कल्पना नहीं कर सकते। शायद हम इसकी कल्पना नहीं कर पाते। CRPD, अभी एक सर थे जिन्होंने UNCRPD की बात की। जब UNCRPD विकलांग लोगों के अधिकारों का संधि पत्र जो है, जब ये बन रहा था, तो यहाँ भारत में भी हम सब बहुत सारे साथी संस्थाएं एक साथ मिलकर हम सब बात करते थे, समझते थे, और जो हमारे यहाँ से लोग जाते थे वहाँ पे, हम उनको कहते थे कि देखिए, आप ये हक की बात कीजिए, आप वो हक की बात कीजिए। और CRPD जब आया तो हमारा देश, हमको गर्व है, हमारा देश एक पहला देश था जिसने इस CRPD को रैटिफाई किया। उस CRPD में रिकग्नाइज किया कि बच्चों की जो अहमियत है, आर्टिकल 7 जो है, वो सिर्फ एक अकेला आर्टिकल नहीं है, वो रिकग्नाइज करता है, जैसे कि हमारा अपना कानून 2016 का रिकग्नाइज करता है कि बच्चों के हक सारे हकों के साथ जाते हैं। वो अकेला एक हक नहीं हो सकता है, वो सारे CRPD, वो सारे कानून में उसकी अहमियत है। किंतु आज जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, CRPD कमेटी की ही रिपोर्ट जो मैंने अभी पढ़ी आने के पहले, वो क्या हमें बता रही है? हमें बता तो दिया है बहुत सारे लोगों ने, पर बच्चों के बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगी कि एक तो है साफ सफाई के साधन। जब इस तरह की आपदा आती है जहाँ पे कोई सोच ही नहीं है कि हम एक बच्चे को सेफ रख सकते हैं या उसको हम बचा सकते हैं, तो शेल्टर नहीं है, पर खाना पीना साफ सफाई ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बीमारियों की क्या हालत होगी वहाँ पे। सुगम्यता, हम कैंप्स की बात कर रहे हैं। कैंप्स क्या सुगम्य हैं बच्चों के लिए? क्या वो खेल सकते हैं वहाँ? क्या वो पढ़ सकते हैं वहाँ?
हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो हम बचपन के साथ एक जोड़ के रहते हैं, हम सब अपने बचपन में ये सब चीज़ें करे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कैंप्स में बच्चे रह रहे हैं, जो आज जिनके हाथ पैर ही नहीं रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो क्या कर पा रहे हैं, ये प्रश्न बार बार हमारे सामने उठता है। कैंप में जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा अपनी ज़िंदगी में, अगर वो बढ़ पाएगा तो क्या आगे उसकी ज़िंदगी की अहमियत होगी और क्या उसके एक्सपीरियंसेस रहेंगे एक मानवता के बारे में कि क्या मानवता होती है, क्या क्या इंसानियत होती है। ट्रॉमा की बात विकलांग बच्चों को, कई बच्चों की आज बात हुई है जो विकलांग हो गए हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से विकलांग हैं, जो जानते हैं, जो पहले से ही जानते हैं कि कोनों में या एक जो एक्सक्लूजन जिसे हम कहते हैं, सोसाइटी के किनारों में रहना का क्या मतलब होता है, पहले से ही जानते हैं। तो अब इस स्थिति में इन बच्चों के लिए, जिनके लिए कुछ और ज़्यादा होना चाहिए था, शायद और कम और बिल्कुल ही नहीं, ना तो पढ़ाई ना खाना। हमें पता है कि जब जब किसी भी महामारी में, किसी भी आपदा में, जब खाना पीना ये सारी चीज़ों की कमी होती है, तो बच्चों के लिए लास्ट ये सब चीज़ें होती हैं, जितना भी लोग कोशिश करें। और विकलांग बच्चों के लिए और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, और कई बार जो खाना होता है वो उनके लायक नहीं होता है। तो जब हम रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी स्थिति में। फैमिली सेपरेशन, ये सारे CRPD की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो बच्चा है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो अपने फैमिली से अलग हो जाए। और ये हमने अभी सुना, तो मुझे आपको और बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि फैमिलीज़ कई बार रुक नहीं पाती हैं, या ये बच्चा अलग हो जाता है क्योंकि वो शायद और तेज़ी से नहीं जा पाए। तो फैमिली से, अपने परिवार से अलग हो जाना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपदा में कई बार होती है। शिक्षा की बात तो हम भूल ही जाएं। शिक्षा तो जो कि इतनी ज़रूरी होती है आगे के लिए, वो अभी शायद इन बच्चों के लिए, अभी जैसे कि हमारे साथियों ने बोला, अभी तो हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, और शिक्षा शायद इन स्थितियों में, कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों में एक बेसिक नहीं रह जाता है। सारी जो इमारतें हैं वो सुगम्य नहीं रह जाती हैं। स्कूल्स, कल को जो स्कूल्स आगे होंगे, या जो स्कूल जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, जो स्कूल्स होंगे वो सुगम्य होंगे कि नहीं, बच्चे आगे जा पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वार्निंग सिस्टम्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आजकल हम अपने देश में ये सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी आपदाएं हो रही हैं सब जगह, नेचुरल कैलामिटीज़ एवरीवेयर, कि जब ऐसी आपदा आती है तो वार्निंग बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चे के लिए, जो अभी हम कह रहे हैं डेफ बच्चों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वार्निंग सिचुएशन अगर नहीं उसे सुनाई देगा, नहीं पता होगा कि उसे कहाँ जाना है, तो वो कैसे जाएगा। तो ये जो सुगम्यता की बात है, वो एक बात सिर्फ नेक्स्ट लेवल की बात नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं।
और ये सारी चीज़ें शायद अभी उपलब्ध नहीं हैं। मृत्यु का जो एक रिस्क है वो बढ़ जाता है सबका, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, वॉर के सिचुएशन में, पर बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों के लिए। ऐसी और बहुत और चीज़ें, और मुझे आप कह रही हैं कि मैं समाप्त करूं, पर अंत में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि CRPD, हम सब CRPD जो यहाँ बैठे हैं, शायद CRPD हमारे लिए एक तरह की बहुत बड़ी चीज़ है, पर जो CRPD में अगर आप आर्टिकल 3 देखेंगे, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, डिग्निटी, इंक्लूजन, इंडिपेंडेंस, ह्यूमन डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें अभी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। शुक्रिया। थैंक यू राधिका मैम, और आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और फिर हम लोगों को बताने के लिए कि ख़ासतौर से जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं तो जो ऑलरेडी चीज़ें झेल रहे होते हैं बच्चे, उसके आगे उनको और भी बहुत कुछ फिर झेलना होता है। हम लोगों के नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर विजय के तिवारी। वो लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस, वो वहाँ से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। और बाकी वो काफ़ी और भी काम करते हैं अकेडमिक, उसमें ख़ास तौर से वो भी एक स्पेशल इशू है लॉ का, उसमें काम कर रहे हैं जिसका फोकस है पैलेस्टाइन पे, और उसमें वो एक अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवर टू यू विजय। एंड विजय लास्ट स्पीकर हैं हमारे आज के पूरे प्रोग्राम के। Thank you. Am I audible? Yes. I'm not sure whether I'm audible. Can anyone confirm? Hi, can anyone confirm that whether I'm audible? Okay, great. Thank you, NPRD and Jan Swasthiya Abhiyan, to invite me for this very, very important session on Palestine and disability. When I got this invitation, I was thinking that what would I speak, because my topic was Palestine and India's disability movement. And I jotted down few points to speak. And, there are several profound issues on which you can speak. And, I felt that, when I was writing about Palestine and how India's disability movement should approach the question of Palestine, I was in deep pain and anguish. But when I joined around 3 p.m., I joined and I saw there were a few Palestinian comrades talking to each other in Arabic. And all of a sudden, one comrade translated something for us. And she said that, we are talking that in Palestine, we are always late, and we thought that we are having this program abroad, so they will be on time, but you guys are also late. And that made me chuckle. That made me chuckle for two reasons. That yes, we Indians are always late, and we started late. But at the same time, the people who are under tremendous pressure because of secular colonialism, the war which is going on in Gaza, you know, they have their own resilience and, they have their own, smile with them. And that nobody can take it away from them. And that was a great
a lesson for me in human resilience. Um, I'm a professor of law, and my specialization is international law. I'm also a person with disability, so I work in a critical disability studies. And I also look at India's disability movement with close quarters and in a very critical pursuit. So I will be speaking on the failure of international law, which is my discipline, and how should India's disability movement approach the Palestine question. So my first epistemic provocation for this is that Palestine is debilitated and Palestine is disabled. And that is why it requires the profound empathy of India's disability movement. So let me elaborate on this point that Palestine is debilitated and Palestine is, disabled. Now, the way Israeli state and its military, uh, puts the entire Palestinian population under its sovereign authority and it wears down them slowly. That is something, that makes every Palestinian body a disabled body. Now, philosophers have talked about it. They have said that not every disabled, not everybody might be disabled, but they are destined to be disabled. And when you are in a situation where there is a constant bombardment, when there is a settler colonialism, which has a very brute machinery of war, you know that even if you do not have a disabled body today, it is quite high likely that you will be disabled tomorrow. And that is the situation of the Palestinian population. And that is why I said that Palestine is debilitated and Palestine is disabled. Now, what happens that how Israeli state misappropriates the language of disability and also the language of LGBTQ plus right. Last year, I think Netanyahu, I did not hear this year's speech because I wanted to boycott him. Last year, when Netanyahu spoke about it, and then he talked about, that how LGBTQ plus people are wrong or disabled people are wrong in supporting Palestine, while Israel has a good record on supporting disabled rights and LGBTQ plus people. I found it extremely mendacious and also, preposterous in a way. Your pink washing and your disability washing cannot take away the genocide of the Palestinian people. And world has to acknowledge it. Western democracies has to acknowledge it. And I would like to highlight this point that when we talk about, the hypocrisies of Western democracies, hypocrisies of, of Israel on this question, I would not like to spare my, my own disability movement here in India. Now, India's disability movement primarily projects itself as an apolitical movement. My primary idea is that though it projects itself as an apolitical movement, it is not. It is it is highly centered to the middle class issues, which talks about some concessions, affirmative actions in services, in employment, in education, but that comes with an ideology, and that ideology is not to take positions on the issues which have a profound impact on humanity. So I find it very political in nature, and that is why I condemn India's disability movement, at least the dominant ways, in which India's disability movement project itself, not supporting Palestine. But that does not mean that not everyone within the India's disability movement, not supporting Palestine. Uh,
So National Platform for Rights of Persons with Disabilities, NPRD, Jan Swasthiya Abhiyan, etc. They are here to support Palestinian people. And I would like to assure my Palestinian comrades here that though the dominant, the ideology of India's and those dominant actors might not be issuing any statement in favor of you, there are voices who appreciate Palestinian, uh, idea of self-determination, and we support, a Palestinian cause of statehood. And we also appreciate this point that settler colonialism produces the biggest debilitation. Uh, I would also like to highlight one point which my Palestinian comrades should know, that the failings of international law, should trouble us. So international law, primarily after 1990s, after the dismemberment of USSR, was called that it is a rule-based, international law. However, that rule-based international law was always hypocritical, and it always served the interests of the Western democracies, especially United States of America and Israel. And we have seen that. And I think the failings of international law provides us a unique opportunity to question the impulse of settler colonialism that shapes the international law. I think, the report has just come, which clearly states that Israel is committing genocide in Gaza, and also even the International Court of Justice has said that it found the plausible cause that Israel is committing genocide in Gaza. Now, all this, becomes a very, very important issue for the disability movement. At least the disability movement, which claims that it stands with the people anywhere in the world, people of global South, people of Palestine, people of India, the Dalit people, the Adivasi people, the women, and other. So that disability movement will continue to stand with Palestine. I will take 2 more minutes to highlight one point. The apolitical disability movement in India has relied heavily on the state agencies and very pro, state judiciary for gaining these rights. That kind of a apolitical disability movement has to be challenged, because that kind of a movement can never stand with the people and the right side of the history. Now, I will give one example for this. The dominant narrative, which is the very litigation heavy disability movement of India, relied heavily on judiciary, and it projected one Supreme Court judge, Justice Chandrachud, as some kind of a savior of disabled people. Few days back, when he was giving an interview, he stated about the Babri Mosque dispute, that it was, erection of the Babri Mosque was the fundamental act of desecration. Now, that was the expression of majoritarianism. Now, that clearly suggests that these judges of Supreme Court and High Courts, they might be providing us some rights, some affirmative action in order to tweak their bad human right records, and they find disability or LGBTQ plus right as low intensity human right issues, right? So we need to appreciate that rights are political in nature, and accordingly we need to act on that. Bombay High Court, the way it has denied the CPM, the right to hold rally in Azad Maidan of Bombay, clearly shows that our judiciary is very tilted uh, towards majoritarianism, right? So we all work within these very constraints, but yet we need to speak for the people. And I think, speaking for the Palestinian people is being at the right side of the history. So I have,
all my solidarity for NPRD, for JSA for organizing this program, and my solidarity for the Palestinian people, because this is the cause of humanity, and this is the profound question, maybe the most important question of our time. And if we cannot show our solidarity with the Palestinian people, then we will be damned in history. I'm sure about it. Thank you. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर विजय। तो प्रोफेसर विजय ने बेसिकली ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी जो पैलेस्टीनियंस हैं और उनके साथ दर्ज की, पर उन्होंने कहा भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि दो तरह के यहाँ पे डिसेबिलिटी राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक जो डोमिनेंट और मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्चुअली एक तरह से एपॉलिटिकल हैं, अराजनीतिक हैं, वो राजनीतिक हैं। वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि डिसेबल्ड लोगों के जो हक हैं वो अलग हैं, आपका जितना भी बाकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है उससे काफ़ी अलग हैं। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है और आपको हक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, वो सब सवाल खड़े होते हैं जब हम लोग राइट्स की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के राइट्स हों, इंक्लूडिंग जो डिसेबल्ड लोग हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उसके दूसरी तरफ एक दूसरा भी मूवमेंट है जिसमें जैसे NPRD और JSA जिन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, जो इस राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समझते हैं और उन सबको जोड़ के हकों के बारे में और डिसेबल्ड लोगों के हकों के बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से वही सही तरीका है जाने का, और इसीलिए हम सब लोग आज जो यहाँ पे हैं वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मोरलेस हाँ, और बस एक और इम्पोर्टेंट बात शायद की कि जो लोग सोचते हैं कि ये सब राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, वो ज़्यादातर जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, जो सरकारी तबका है, उसके हिसाब से काम कर रहे होते, तो वो अपने आप में एक फिर प्रॉब्लम होके खड़ा हो जाता है हमारे सामने। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मैं कहूँगी मुरली आप वोट ऑफ थैंक्स या आप एक बार दें, नहीं आप करें क्लोज आज का प्रोग्राम। हाँ साथियों, like first of all I would like to thank the speakers actually, speakers who joined us, especially from Gaza and West Bank, and Professor Vijay Prasad actually was joining from the airport actually. He was back from Beirut in Lebanon. He had been to Palestinian relief camps there, Palestinian refugee camps there. And also Professor Vijay Tiwari, a friend who joined from Calcutta. And first of all, Ambassador actually, what is Ambassador Rafiq. I had been to the Palestinian embassy a few days back. I learned a new word, Rafiq. रफ़ीक तो हमारे यहाँ नाम होता है, रफ़ीक मीन्स कॉमरेड। तो आप हमारे साथी हैं, आप हमारे कॉमरेड हैं, तो नया शब्द जो है उन्होंने सिखाया हमको। हम इस मौके पर ऑन दिस ओकेशन हिज एक्सेलेंसी on behalf of Indian disability movement, Vijay Tiwari went on a discordant note, of course, I agree with that. Not that we don't agree with that, but on behalf of the people who follow us, on many of people of theirs who are there, we'll stand with you in this fight for liberation of Palestine. With these words, I conclude this session. आप सभी साथी जो बाहर से आए हैं, खासकर हरियाणा से बहुत सारे साथी आए हैं और अलग अलग संगठन से और अलग अलग DU से साथी हैं, दूसरे लोगों से साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देते हुए आज की इसको समाप्त घोषित करते हैं। और इलाही आज ये बात तो थी, बस सड़कों पे उतरने का टाइम आएगा और हम उतरेंगे। थैंक यू।